Hello guys, Assalamu alaikum. Welcome to our episode 40 of People's Podcast Pakistan. As usual, हम अभी Nicomachean Ethics by Aristotle के ऊपर ही हैं और हम आज इसकी बुक 6 को रिव्यू करेंगे अब्दुल्ला। और हम बुक 6 में डिटेल में डिस्कस करेंगे इंटेलेक्चुअल वर्चूज़ को। इफ़ यू रिमेंबर अब्दुल्ला, लास्ट टाइम चैप्टर 5 से पहले बुक 5 से पहले बुक 4 में हमने मॉरल वर्चूज़ को डिस्कस किया था इन डिटेल। तो इसमें हम इंटेलेक्चुअल वर्चूज़ को डिस्कस करेंगे और इस बुक में एरिस्टोटल ने सारे इंटेलेक्चुअल वर्चूज़ को वन बाय वन उनको डीपली एक्सप्लेन किया और काफ़ी उनको आप ये कह लो कि विच वंस आर द वंस विच यू कैन डेवलप थ्रू योर ओन प्रैक्टिस और विच वंस दैट आर इनेट। तो हम इसके अंदर अभी जंप करते हैं अब्दुल्ला। तो इंट्रोडक्शन में कुछ ऐड करना चाहोगे आप? यार, लाइक यू सेड, एरिस्टोटल ने लास्ट बुक 5 में जस्टिस की बात की थी। उससे पहले मोरल वर्च्यूज़ की बात की थी। और मोरल वर्च्यूज़ की काइंड ऑफ यूएसपी ये थी कि आप उन हैबिचुएशन और प्रैक्टिस से उनको लर्न कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो। बट ऑन द अदर हैंड देयर आर अदर वर्च्यूज़ व्हिच ही कॉल्स इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज़, जो आप हैबिचुएशन या प्रैक्टिस से नहीं बल्कि लर्निंग से या फिर साइंटिफिक नॉलेज इस तरह है कि आप उसकी थ्योरी में जाके आप उनको समझते हो। और इट्स लाइक जो डिफरेंस है ना साइकोलॉजी और फिलॉसफी का, फॉर एग्जांपल, कि एक इंसान है who do not who does not know what virtue is or why they do the things they do. So through psychology they'll understand why people do what they do, and why they did the good they did or why they did not do the good they did. But through philosophy उनको फर्क समझ आता है between good and bad. उस तरह moral virtues and intellectual virtues के through they'll know what it is to be good, and they'll know how to be good by the combination of the two. तो पहले उसने मॉरल वर्च्यूज की बात की है, अब बुक 6 में ही लिस्ट डाउन ऑल द इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज, जिसकी अपनी डिफरेंट काइंड्स हैं, व्हिच विल गेट इनटू। यस अब्दुल्ला, बिल्कुल सही बताया आपने। और हाँ, कैन यू हेयर मी? या अब आवाज आ रही है। आवाज़ आ रही है? ओके, मैं पहले ही बोलना शुरू हो गया था, मेरा माइक म्यूट था। यस, सो वही बुक 1 में हम इंटेलेक्चुअल वर्चूज़ के अंदर जाएंगे। और वह इसमें पहला जो है आप कह लो चैप्टर 1 जो है बुक 6 का, इसमें पहले एरिस्टोटल ने आर्ग्यू किया है कि जिस तरह मॉरल वर्च्यूज़ एक बंदे की करैक्टर और डिस्पोजिशन के ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं, उसकी करैक्टर और बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं, उसकी डिस्पोजिशन को चेंज कर सकते हैं, वेदर इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज़ के अंदर वो प्रॉपर्टीज़ हैं कि नहीं एज दैट ऑफ मॉरल वर्च्यूज़। तो उसमें बेसिकली एरिस्टोटल यही कहता है कि जो इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज़ हैं या दे आर बेसिकली लर्नड थ्रू प्रैक्टिस एंड they are learned through learning, they are learned through your own you can say contemplation and calculative nature as well। मगर साथ में ये जो है ज़रूरी नहीं है कि जो बंदा है जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज़ हो ही इज़ मॉरल वर्च्यूज़ एज वेल, और उसके अंदर बिहेवियर है, ही हैज़ अ गुड डिस्पोजिशन। तो पहले तो उसने चैप्टर 1 में इस बात को क्लियर किया। सेकेंडली उसने आगे जाके डिस्कस ये किया है कि हमारी सोल की 2 रैशनल पार्ट्स हैं। एक तो कैलकुलेटिव पार्ट है और एक है इंटेलेक्चुअल पार्ट। तो कैलकुलेटिव पार्ट जो है उसने बताया सोल का, कैलकुलेटिव पार्ट ऑफ सोल जो है वो प्रैक्टिकल रीजनिंग को फॉलो करता है और ये हमारी डे टू डे डिसीजन मेकिंग और प्रैक्टिकल मैटर्स के साथ रिलेटेड होता है, सच एज फाइनेंसेस और पॉलिटिक्स एंड एथिक्स, मॉरल एथिक्स एज वेल। अब ये जो पार्ट है हमारी सोल का, इट इज़ कंसर्न विद द कैलकुलेशन, मतलब कि अगर हमने कैलकुलेट करना है अपने सर्कमस्टांसिस को, अपने आसपास के मीन्स को टूवर्ड्स आवर एंड गोल, जो हमारा गोल है हम इसकी तरफ उसको आपकी कह लो इट्स बेस्ड ऑन आवर कैलकुलेशंस बेसिकली। और यही आगे इसी के ज़रिए यू कैन से वी कैन मेक साउंड जजमेंट्स एंड विच आर फेयर एंड equitable in our distributive justice, which we have already discussed in book number 5। अब जो साइंटिफिक पार्ट ऑफ सोल है उसने आगे आगे डिस्कस किया, इट इज़ कंसर्न विद थ्योरेटिकल रीजनिंग और हमारी जो कॉन्टेम्पलेशन सोच विचार के साथ जो हमारा हिस्सा दिमाग का ये उसके साथ कनेक्टेड है। दिस ये जो पार्ट है सोल का, ये नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग
के ऊपर बेस्ड है बेसिकली। और it is basically the contemplation of our mind about the world around us. इसके अंदर क्राफ्ट्समैनशिप भी आ सकती है, इसके अंदर नॉलेज अबाउट कॉस्मोस, कैसे इसमें फिलोसफी भी आ जाती है। ये सारे जो हैं, इट दीज आर कंसर्न विद द साइंटिफिक पार्ट ऑफ आवर सोल। अब इसमें इस चैप्टर वन में अरिस्टोटल ये बताने की कोशिश करता है कि बोथ दिस कैलकुलेटेड और कॉन्टेम्पलेटिव पार्ट ऑफ सोल as well as the scientific part of soul are necessary for a healthy soul। आप भी कह रहे हो कि हमारी हेल्दी सोल या हमारी सोल की नरिशमेंट के लिए ये दोनों जो पार्ट्स हैं सोल का, इनका बैलेंस में होना ज़रूरी है। जहाँ कैलकुलेटिव पार्ट हमें इनेबल करता है कि हम कौन से डिसीजन में किस सर्कमस्टांसिस को किस तरह वे करते हुए एक फेयर और एक साउंड जजमेंट अप्रूव करें। उसी के साथ साथ जो साइंटिफिक नॉलेज है या साइंटिफिक पार्ट हमारी सोल का है, वो हमें नॉलेज प्रोवाइड करता है हमारे आसपास के वर्ल्ड में, और हमें एक्सपीरियंस देता है। तो बेसिकली एरिस्टोटल इज ट्राइंग टू से कि क्या एक तो हमारे अंदर एक वो हिस्सा होना चाहिए कि हम कैलकुलेटिव या फिर जजमेंट कर सकें कैलकुलेशंस की बेस्ड के ऊपर हमारी पार्ट, और साथ में हमारे अंदर एक बेसिक, आप कह लो कि साइंटिफिक नॉलेज भी वर्ल्ड की होनी चाहिए। तो डू यू वांट टू ऐड एनीथिंग ओवर हियर अब्दुल्ला? या यू राइट। वो चैप्टर के शुरू में ही वो एक डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन पार्ट्स ऑफ द सोल, एंड उसकी उसके साथ साथ ही वो इंटेलेक्चुअल वर्च्यू के डिफरेंट काइंड्स बताता है, जिसमें प्रोडक्टिव आती है, प्रैक्टिकल आती है और थेरेटिकल आती है। इसके बाद वो इन वर्च्यूज़ की मज़ीद 5 काइंड्स बताएगा, बट टू गेट ओवर विद दीज़ थ्री थ्री क्लासिफिकेशंस: थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल एंड प्रोडक्टिव। थ्योरेटिकल आपको बेसिकली उन तरह के नॉलेज के बारे में बताती है विच आर टू बी सॉट आफ्टर फॉर इट्स ओन सेक इन थियरी। फॉर एग्जांपल, मैं एक थियरी पढ़ता हूँ इन फिलॉसफी just for the sake of my own curiosity, right? And that's just in theory, I'm not applying that in anything else. उसका further कोई end नहीं है, but that knowledge is for its own sake only. जबकि practical knowledge जो दूसरी kind है knowledge की, I said in intellectual virtues before, but that's classification of knowledge. Practical knowledge concern होता है with knowledge जो आप apply कर सकते हो in action, which is opposed to theoretical knowledge. And productive knowledge is usually for creative endeavors, कि आप वो knowledge gain करते, for example, if you're a guitarist, you learn music theory, for example, you apply music theory in creating your music. That's some kind of a productive knowledge. उसके बाद वो बात करता है about intellectual virtues themselves and their kinds. Moving on to them, do you want to explain them or should I move on? अब्दुल्ला, बस इसमें मैंने एक बात ये ऐड करनी थी कि हम जहाँ कैलकुलेटिव पार्ट और साइंटिफिक पार्ट ऑफ सोल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, इसमें एरिस्टोटल ने आर्ग्यू किया है कि जो कैलकुलेटिव पार्ट है, इट्स मच यू कैन से इट्स मच सुपीरियर टू द साइंटिफिक पार्ट ऑफ अवर सोल, because the calculative part is more based to more, you can say, is responsible for our decision making। और मतलब ये बेस करता है कि हम अप्रोप्रिएट एक्शंस करते हैं कि नहीं करते। वाइल साइंटिफिक पार्ट ऑफ सोल इज कंसर्न विद द नॉलेज ऑफ फॉर इट्स ओन सेक। फॉर एग्जांपल अब्दुल्ला, यू मे हैव साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, मगर आपके अंदर वो कैलकुलेटिव पार्ट अगर सोल का ना हो, तो देन यू आर नॉट गुड टू द वर्ल्ड। आप अपनी आपके अंदर वो डिसीजन मेकिंग, वो सिचुएशंस को वे करना, अपने ऑप्शंस को आसपास वे करके एक अच्छा डिसीजन करना किसी भी सिचुएशन में, इट इज़ वेरी यूज़फुल। चाहे आप जाहिल हो, मगर आपका कैलकुलेटिव पार्ट अच्छा है, इट्स बिकॉज ऑफ योर ओन मॉरल वर्च्यूज, उसकी प्रैक्टिसेस की वजह से या फिर हैबिचुएशन की वजह से। तो देन यू आर स्टिल अ वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। मगर अगर आपके पास अंदर ये कैलकुलेटिव पार्ट नहीं है, देन यू ओनली हैव साइंटिफिक पार्ट जो है आपकी सोल का, मतलब क्या होता नहीं कि खोते पे किताबें लादने वाली बात है कि आपके पास किताबें तो बहुत ज़्यादा पढ़ेंगी, मगर आपके पास वो कैलकुलेटिव पार्ट आपका सोल का बिल्कुल काम नहीं करता, देन यू आर नो गुड टू द सोसाइटी। डू यू एग्री अब्दुल्ला ओवर हियर? यार, डिफरेंस इन दोनों का वही है जो प्रिसाइजली एक इंटेलिजेंट एकेडमिशियन का है, या फिर एक
एक स्ट्रीट स्मार्ट पर्सन का है, एक इंसान जो फॉर एग्जांपल विद देयर स्ट्रेट एज एंड एवरीथिंग विद देयर 1600 एसएटी स्कोर, एंड द अदर पर्सन हु is actually wiser in practical matters because they're street smart, they have more experience, उनके पास experiential knowledge ज़्यादा है, तो obviously that tops everything else. No matter how much you've studied in theory, अगर आप उसको अप्लाई नहीं भी कर रहे, लेकिन अगर आपने उसको खुद सीख लिया थ्रू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, then obviously that is superior to uh, theoretical or the contemplative part of your soul, according to Aristotle at least. So I agree. यस, यस, नो वरीज। तो अब्दुल्ला, वही आप आगे हमने डिस्कस करनी थी 5 स्टेट्स ऑफ माइंड बेस्ड ऑन साइंटिफिक पार्ट ऑफ आवर सोल। तो इसमें जो इसमें जो पहला है उसका नाम, उसको हम कह सकते हैं साइंटिफिक नॉलेज, दूसरा है क्राफ्ट्समैनशिप, तीसरा है इंटुइटिव रीजनिंग या फिर इंटेलिजेंस कह सकते हैं, नंबर 4 पे विजडम, और नंबर 5 पे प्रैक्टिकल विजडम। साइंटिफिक नॉलेज ये इसको कहता है अरिस्टोटल की, इट इज़ द लाइक फाइनेस्ट एंड हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज, और इट इज़ बेस्ड ऑन डेमोन्स्ट्रेशन एंड लॉजिकल प्रूफ्स। मतलब कि इसको जो साइंटिफिक नॉलेज को जो बैक करता है, ये लॉजिकल रीजनिंग या प्रूफ्स जो हैं वो साइंटिफिक नॉलेज को बैक करते हैं। और ये जो है दीज आर एक्वायर्ड थ्रू डिडक्शन एंड डिडक्टिव रीजनिंग बेसिकली। So, as you have already told us about deduction, the method of deduction, the more you deduct the false statement, you can reach towards the you can reach towards the truth, or in this case, you can reach towards the final equation in terms of scientific knowledge. Number two, hey, craftsmanship. This is a type of, you can say, practical scientific knowledge which is gained through, you can say, mode of experience and practice. Basically, it is specific to the particular. It is where you can say it varies through with various types of craftsmen और स्केल्स के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट किस्म की क्राफ्टमैनशिप्स होती हैं। और यू कैन से कि ये जो क्राफ्टमैनशिप है, दिस इसका जो आप कह लो कि दीज आर बेसिकली एक्वायर्ड थ्रू मोर और लेस थ्रू एक्सपीरियंस एंड यू कैन से प्रैक्टिस। नंबर थ्री जो है इंटुइटिव रीजनिंग, ये जो है ये इट्स अ टाइप ऑफ रीजनिंग जो कि हमारे परसेप्शन से बाहर चली जाती है। इसके अलावा इट इन्वॉल्व्स ग्रास्पिंग ऑफ बेसिक प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स आप कह सकते हो। इट इज़ बेसिकली कंसर्न विद कॉन्टेम्पलेटिव थिंकिंग और फिलोसफी वर्ड एंड फिलोसफी बेसिकली। इट इज़ बेसिकली, you can say, uh, Abdullah, how would you define intuitive reasoning and philosophy over here? यार इंट्यूटिव रीजनिंग आप कह सकते हो इन द सेंस एरिस्टोटल हैज यूज्ड द वर्ड इंट्यूशन और इंटेलिजेंस। जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है, सॉरी, जो मॉरल वर्च्यू का नाम है, द फर्स्ट वन, इट इज इंट्यूशन और इंटेलिजेंस। इट इज बेसिकली आपकी एबिलिटी टू ग्रैस्प very complex ideas in simple terms by contemplating on the first principles. For example, you um, read Nietzsche's theory of eternal recurrence, right, which is, I believe, not very, but you're able to deduce what he sense of the theory and the motive of the author, for example, or the proponent of the theory, और आप उसको समझ पा रहे हो, and that is through the power of your intelligence, जो tamed है to some extent, जो developed है to some extent। एक इंसान जिसने आज तक कोई किताब नहीं पढ़ी कोर्स से बाहर अपने, उसको वो थ्योरी समझ नहीं आएगी, जबकि वो थ्योरी इतनी 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 एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स नहीं है फॉर पीपल लाइक यू एंड मी जिन्होंने थोड़ी सी फिलोसफी पढ़ी हुई है। बट टू दैट पर्सन हु इज आउटसाइड द स्फीयर ऑफ फिलोसफी, उनके अंदर उस सेंस में इंटेलिजेंस और इंट्यूशन, जिसकी वजह से दे विल नॉट बी एबल टू ग्रैस्प द रेलेवेंट अमाउंट ऑफ कॉम्प्लेक्स आइडियाज इन दैट थ्योरी। दैट इज व्हाट ही मेंशंस मीन्स बाय इंट्यूशन या इंटेलिजेंस। अच्छा, तो So हम्म, basically, are we कह सकते हो कि intuitive reasoning is basically, you can say, understanding certain principles or concepts without necessarily being able to, you can say, uh, articulate them. मतलब कि आप ये
इट्स बेसिकली अबाउट फिलोसफी कि दिस ये जो आप कह रहे हो कि दिस टाइप ऑफ रीजनिंग, जो ये जो रीजनिंग की जो किस्म है, ये हमारे परसेप्शन से बाहर जाती है, और इट्स बेसिकली समथिंग most of the people who don't have knowledge cannot really comprehend of it. It also involves complex thinking as well, and इसमें फिर मॉरल्स भी आ जाते हैं इसके अंदर, फिर यूनिवर्सल अभी कह लो कि नॉलेज भी आ जाती है इसके अंदर, अभी कह लो वट इज गॉड का, मतलब कि इट्स बेसिकली अबाउट फिलोसफी। ये जो नाउ नाउ से या फिर इंटुइटिव रीजनिंग है, इट इज़ बेसिकली फिलोसफी इन सिंपल टर्म्स। ओके, उसके बाद हेलो। Yeah, you hear me, man? यस आई कैन हियर यू, है ना, तुम्हारा शायद इंटरनेट का दोबारा से हैंग हो गया है। ओके, नो वरी। तो उसके बाद बोला यू विल डिस्कस सोफिया which is basically wisdom. This is a type of, you can say, knowledge for जिसके अंदर आप कह लो which is followed by principles and causes। basically इसके अंदर हमारी understanding होनी चाहिए about the nature of reality, and it is also based on the combination of intuition, हमारा experience, and as well as reasoning। उसके बाद जो लास्ट है विच इज़ प्रैक्टिकल विजडम। प्रैक्टिकल विजडम ये उस किस्म की नॉलेज है जो कि हमारे प्रैक्टिकल मैटर्स के साथ कंसर्न होती है, और इसके अंदर आप कह लो गुड जजमेंट्स और हाउ टू एक्ट इन पर्टिकुलर सिचुएशंस। इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंस, एम्पैथी, एंड डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर एंड दिस डिपोजिशन एज वेल। इसके बाद if you go towards book number 4 of sorry book chapter number 4 of book 6, Aristotle in discusses about products and acts in different kinds of things and entities in concept of was this Abdullah, have you studied about products and acts? Products are basically, you can say, the things that has been brought into existence with some time with some kind of, you can say, intentional action or process। जबकि आपका जो एक्ट होता है, एक्ट जो है, एक्ट इज a certain type of action or behaviors that are performed by some agent, और उसका जो एंड रिजल्ट होता है, एंड रिजल्ट इज बेसिकली प्रोडक्ट। तो हैव यू रेड अबाउट दैट इन book number 6? इन चैप्टर 4 या ये इंटरडिपेंडेंस की बात करते हैं इन वर्च्यूज की, क्योंकि ये 5 वर्च्यूज तो बताते हैं अरिस्टोटल, बट ही सेज कि इनकी कॉम्बिनेशंस, जिस तरह वो विजडम की बात करते हैं कि विजडम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हैविंग इंट्यूशन एंड साइंटिफिक नॉलेज, राइट, रीजनिंग व्हिच यू सेड। उसी तरह प्रूडेंस इज आल्सो अ कॉम्बिनेशन ऑफ वन और टू ऑफ दीज वर्च्यूज, टू और थ्री ऑफ दीज वर्च्यूज। एंड प्रोडक्ट्स एंड एक्ट्स की वो बात करता है कि आप एक, आपके पास एक नॉलेज है व्हाट what it means for you to be virtuous, but the actual process of having or acquiring that virtue, it revolves combining one or two of these intellectual virtues। और आपको, आपके पास एक पूरा पाथवे होगा कि I will have to do this thing which is an act, इसका प्रोडक्ट जो होगा which is a means, हाउ कैन आई एक्वायर दैट। और वो तब होगा जब आपको पता कोई इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज कौन सी हैं, और आप अपने प्रैक्टिकल विजडम को लेके, इंट्यूशन को लेके, और साथ ही साथ साइंटिफिक नॉलेज को लेके आप एक्वायर करोगे वो एंड और वो प्रोडक्ट। ही टॉक्स अबाउट दैट इन चैप्टर 4 ऑफ बुक 6 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। यस अब्दुल्ला, इसके कॉन्टेक्स्ट में साथ में एरिस्टोटल ने आर्ट को भी डिस्कस किया है कि हाउ प्रोडक्शन एंड एक्शन ऑफ स्पेसिफिक काइंड and how different arts are, you can say, basically placed in human life, or you can say you can also say that Aristotle over here argues that art provides a unique contribution to human culture and society। वो कह रहा है यहाँ के हम, मतलब कि when we focus on production with certain actions in mind, it creates art, और art जो है, you can say कि art is a type of knowledge as well। So basically, there is not much या to वो शुरू में discuss जिस about. तरह आई टॉक्ड अबाउट थेरेटिकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज एंड Mm. प्रोडक्टिव नॉलेज।
यस, नो वरीज। उसके बाद हम इसके बाद चैप्टर 5 पे चलते हैं बुक से इसके, बिकॉज़ यस इट्स नॉट मच टू डिस्कस ओवर देयर इन चैप्टर नंबर 4. Chapter 5 में as we already have discussed about practical wisdom, he jumps on to this he jumps on the topic of practical wisdom. uh, wisdom पहले भी अब्दुल्ला हमें हाल में we have discussed, I have read about this in um, I think so, book number 1 and 2 as well. And practical wisdom is basically, you can say, it's about habituation and habituation, or it's guided by our moral virtues as well. uh, इसको हम ग्रीक में कहते हैं phronesis, I think so, in Greek language. तो yes, एरिस्टोटल हमें बेसिकली यहाँ ये बताने की कोशिश करता है कि ही कंसिडर्स practical wisdom a virtue as well, because practical virtue is very really essential for living a good life. उसके अलावा he explains कि practical wisdom जो है, it is very different from other forms of knowledges. uh, जैसे कि हमने फर्स्ट में डिस्कस किया था अबाउट कैलकुलेटिव पार्ट ऑफ अ सोल, बेसिकली प्रैक्टिकल विजडम इज आल्सो द एबिलिटी टू डेलिबरेटली, यू कैन से, to deliberately think and contemplate, और उसके अलावा to use our experience and intuition और in specific situations, और अपने actions को आप कह लो बेसिकली सही से नाप तोल के अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करने का नाम ही प्रैक्टिकल विजडम है. uh, इसमें आप प्रैक्टिकल विजडम में एक्सपीरियंस इस तरीके से आप कह सकते हो कि फ्रॉम योर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस यू हैव सम काइंड ऑफ नॉलेज इन योर अंडरस्टैंडिंग, कि अगर आपने इस सिचुएशन में uh, इस तरह का काम करोगे तो उसका इफेक्ट क्या होगा. तो प्रैक्टिकल विजडम इज ऑल अबाउट मेकिंग साउंड जजमेंट्स और बेस्ड ऑन रिलेवेंट फैक्टर्स इन अवर सिचुएशंस. उसने ये भी कहा है कि प्रैक्टिकल विजडम में बोथ, मतलब कि थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दोनों हमें चाहिए होंगे. थ्योरेटिकल नॉलेज, और अभी थ्योरेटिकल नॉलेज ऑफ जर्नल principles are because principles can be laws of the society that you are living in, और experience ही कह सकते हो कि you have, if you have the prior experience of applying those laws or following those laws in certain situations, तो वो आपका एक prior experience आ जाएगा. उसके अलावा आगे जाके इस चैप्टर में अरिस्टोटल ये आर्ग्यू करता है कि प्रैक्टिकल विजडम जो है ये साइंटिफिक नॉलेज और अदर वर्च्यूज जो से थोड़ी सी डिफरेंट है. साइंटिफिक नॉलेज जो है वो बेसिकली जनरल प्रिंसिपल से और जो ट्रुथ होते हैं यूनिवर्सिटीज के साथ उसके साथ डील करती है, जबकि प्रैक्टिकल विजडम इज मोर कंसर्न विद एप्लीकेशन ऑफ दो नॉलेज और ट्रुथ. साइंटिफिक नॉलेज is basically the knowledge, or practical wisdom is applying that knowledge. Basically that's what Aristotle is trying to tell us over here. उसके बाद आगे वो डिस्कस करता है करेज एंड वर्च्यूज, हाउ करेज एंड वर्च्यूज आर रिलेटेड टू प्रैक्टिकल विजडम. उसके बाद वो ये डिस्कस करता है कि करेज और जस्टिस जो है ये ऐसे वर्च्यूज हैं जो कि हमारे एक्शन के साथ रिलेटेड होते हैं. फॉर एग्जांपल सच एज करेज में है सच एज फेसिंग फियर इन सम सिचुएशंस, और इन जस्टिस में होगा ट्रीटिंग अदर पीपल्स फेयरली. जबकि जो प्रैक्टिकल विजडम है ऑन द अदर हैंड इज़ मोर ऑफ अ जनरल वर्च्यू, और ये हमारे सारे अ, हमारी हर लाइफ के हर एरिया पे अप्लाई होता है. प्रैक्टिकल विजडम अप्लाइज इन एवरी पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जबकि जो है करेज और विजडम से, करेज जो है इट विल ओनली अप्लाई इन द सिचुएशंस विच आर डीलिंग विद फियर, और जस्टिस विल ओनली अप्लाई, जस्टिस का जो वर्च्यू इट विल ओनली अप्लाई इन टू द सिचुएशंस इन्वॉल्विंग अदर्स और ट्रीटिंग देम फेयरली. उसके बाद यहाँ थोड़ा सा ये लंबा चैप्टर है, इसमें आगे जाके एरिस्टोटल ये डिस्कस करता है कि हाउ प्रैक्टिकल विजडम जो है इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग इन विजडम. अंडरस्टैंडिंग इज बेसिकली द एबिलिटी, हमारे अंदर एक एबिलिटी हो जिसके अंदर हम आप ये कह सकते हैं हम अंडरस्टैंड कर सकें अंडरलाइंग या फिर प्रिंसिपल, छुपे हुए राज जो हैं वो हम चीज़ों के हम उनको अंडरस्टैंड कर सकें. अल्टीमेट कॉजेस, रीजंस ऑफ लिविंग, ये सब जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग में है. जबकि प्रैक्टिकल नॉलेज जो है, प्रैक्टिकल नॉलेज इज बेसिकली अगेन
concerned with the practical application of knowledge and understanding of specific situations. तो यहाँ उसने बताया कि एक तो आपके आपकी जो प्रैक्टिकल विजडम है, इट इज़ बेसिकली डिफरेंट फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। एक इंसान के अंदर ज़रूरी नहीं है कि अगर उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉज ऑफ यूनिवर्स वगैरह जो भी आप कह लो, ही स्पिरिचुअली अवेकन्ड, या फिर उसको उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग है वर्ल्ड की, ज़रूरी नहीं है कि वो प्रैक्टिकली वाइज भी हो, या ही हैज़ द एबिलिटी टू अप्लाई हिज विजडम इन दोज प्रैक्टिकल सिचुएशंस। तो practical wisdom is all about doing practical applying practical wisdom in your practical areas of your life. उसके बाद ओवरऑल ये जो पूरा चैप्टर 5 इस बुक 6 का, इट इज़ अ डिस्प्ले, ये पूरी डिटेल एक्सप्लेनेशन है अबाउट प्रैक्टिकल विजडम और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में, और हाउ combining the theoretical knowledge with our practical experience, a moral virtue is developed with the moral virtue of practical wisdom. Dilla, do you want to add anything over here? यार बेसिकली इसकी जिस्ट ये थी चैप्टर 5 ऑफ बुक्स के 6 की, कि यू नीड टू कॉम्प्लीमेंट साइंटिफिक नॉलेज विद प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज विदाउट साइंटिफिक नॉलेज इज लाइक कि आप ना एक डीपर अंडरस्टैंडिंग पे ह्यूमन नेचर या रियलिटी इटसेल्फ को नहीं समझ पा रहे, while scientific knowledge without practical knowledge is lifeless in the sense that it is dull, it is naive even to some extent. So your practical wisdom or your practical knowledge should always be complemented with scientific knowledge. ये था entire part of the chapter 5 of book 6. इसके बाद वो इवन वो थ्रू आउट इस किताब में एजुकेशन की बात करता है। एजुकेशन इन द सेंस कि आपने हैबिचुएशन की तो बात की थी इन मॉरल वर्च्यूज, बट एजुकेशन इन द सेंस ऑफ इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज कि आप सिर्फ इनको एक्वायर कर सकते हो थ्रू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। यू कैन नॉट like put it into practice until you have learned what it is that you have to put into practice. तो ये जो वर्च्यूज हैं ये हमें केयरफुली कल्टिवेट करनी पड़ती हैं अपने अंदर, विच वी शुड सीक आउट एंड एमुलेट फ्रॉम सम आइडियल। और इस एजुकेशन वाले पार्ट के अंदर वो ये भी एम्फोसाइज करता है कि वी शुड हैव अ रोल मॉडल और एन आइडियल whose virtues we emulate. And if we do not have a right ideal, because obviously being humans that are fallible and imperfect, our own implicit ideal of our conscience is not always the perfect ideal, right? Agar aap messed up ho in some, now I'll have to go deeper in this, because jab wo practical wisdom की बात करते हैं ना, तो वो ये कहता है कि अगर ये scientific knowledge से backed नहीं होगा ना, तो your practical wisdom or your practical knowledge is imperfect in the sense कि if the wrong kind of things happen a lot, or if the trajectory is wrong, फॉर एग्जाम्पल एक इंसान है, उसने एक तरह की ही चीज़ें देखी हैं ज़िंदगी में, उसकी अंडरस्टैंडिंग ही पक्की हो जाएगी एक तरह के परसेप्शन से, राइट? ही विल सी थिंग्स थ्रू वन सिंगल लेंस, एंड सो ही विल हैव टू हैव अ डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलिटी और ऑफ ह्यूमन नेचर टू बैक इट अप बाय रीजन। इफ इट डज नॉट डू दैट, तो उसका 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 पर्सनल एक्सपीरियंस, उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस इन लाइफ उसको बायस कर देगा टुवर्ड्स preferring one sort of behaviors, you can say, ideas over other sorts of behaviors and ideas. So that is why I completely lost my train of thought. What was I mentioning before that, before practical wisdom? The entire gist of the chapter again is just to back up your practical wisdom with scientific knowledge. यार एक बड़ा जबरदस्त ट्रेन ऑफ थॉट मेरे दिमाग में आया था, एंड आई जस्ट कंप्लीटली लॉस्ट दैट, आई जस्ट रियलाइज्ड। That's fine, Abdullah. तो मैं इसके बाद सोच में साथ में थोड़ा सा एक जल्दी से डिस्कस कर दूं चैप्टर 6 which is about intelligence. या uh, आई गॉट इट। वो बात कर रहा था आइडियल की, वो बात कर रहा था आइडियल की, और वो आइडियल में प्रैक्टिकल विजडम को क्रिटिसाइज इस तरह करता है, क्रिटिसाइज इफ दैट्स द राइट वर्ड टू यूज, ही सेज कि क्योंकि our practical experience could be imperfect in the sense that it has made us believe all the wrong things which are not virtuous but vicious in fact. तो हमारा जो implicit ideal है of our conscience, that could not always be the right ideal. एक इंसान है, for example, who is a serial killer, चलो आप कह लो,
So their implicit ideal of their conscience is not the right ideal. If it was the right ideal, they would not be a serial killer, right? And that itself has been a perpetuation, and the trajectory which their practical experience led them to follow, right? तो हमें एक आउटवर्ड, अपने से बाहर कोई और एक इंसान को एक आइडियल बनाना पड़ता है और ढूंढना पड़ता है ताकि हम उनकी वर्च्यूज एमुलेट करें, बिकॉज एट द एंड वी आर ह्यूमन एंड आवर own implicit ideal of our conscience could not always be the right ideal. That is why we need to educate ourselves and to find out an ideal, and also to back up our practical wisdom with scientific knowledge. That was it for the fifth chapter of the sixth book. No, it's Abdullah. uh, yes. उसके बाद नंबर 6 पे आएगा इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस डिस्कस करता है इस चैप्टर में एरिस्टोटल कहता है कि इंटेलिजेंस, ये जो है इंटेलिजेंस इज़ द हाईएस्ट पार्ट ऑफ आवर सोल, और ये रिस्पॉन्सिबल है विद आवर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड कॉन्टिप्लेट द हायर ट्रूथ्स ऑफ हाईएस्ट ट्रूथ्स। इट ऑल ये हमें साथ में इनेबल भी करता है कि हम एसेंशियल जो नेचर की नेचर जो नेचर की चीज़ों की हम उनको अंडरस्टैंड कर सकें, और जजमेंट हमारे अंदर पैदा हो सके कि अबाउट व्हाट इज़ गुड एंड व्हाट इज़ वैल्यूएबल बेसिकली। इसको आगे डिस्कस करते हुए एरिस्टोटल हमें बताता है कि देयर आर टू टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। एक तो है एक्टिव इंटेलिजेंस और एक है पैसिव इंटेलिजेंस। Active intelligence is basically thinking and contemplating or reasoning, और दूसरा पार्ट जो है पैसिव इंटेलिजेंस इज ऑल अबाउट लिसनिंग एंड रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग द नॉलेज। आगे जाके एरिस्टोटल ये कहता है कि ये जो आपकी एक्टिव इंटेलिजेंस है, इट इज़ फार मोर सुपीरियर टू योर पैसिव इंटेलिजेंस, बिकॉज एक्टिव इंटेलिजेंस में आप कॉन्टम्पलेट करते हो, चीज़ों को सोचते हो, समझते हो, और इसी प्रोसेस में यू कैन कम अप विद न्यू आइडियाज़ एंड न्यू इंसाइट्स जो कि पहले से मौजूद नहीं थी। मगर अगर आप सिर्फ आपके अंदर एक पैसिव इंटेलिजेंस ही आपका जो है आपके अंदर वो पार्ट हो गया, आप बस सुनते रहो, रिसीव करते रहो नॉलेज को, देन यू आर ओनली रिमेंबरिंग, और यू कैन सी यू आर ओनली गेटिंग द नॉलेज विच इज़ ऑलरेडी देयर। So if you want to get something new, you want to create new ideas, you have to have the part of active intelligence in your soul. और उसने हमें ये बताया कि इंटेलिजेंस इज नॉट समथिंग दैट कैन बी लर्न और एक्वायर्ड थ्रू एजुकेशन और ट्रेनिंग। ये एक नेचुरल फैसिलिटी है, जो कि किसी भी इंसान के अंदर पैदाइश के वक्त से पैदा होती है, विच इज़ बेसिकली ही सेइंग इट इज़ इनेट। But he also suggests that intelligence is something that can be developed and improved through experience and practice. Overall, ये जो पूरा chapter था, it is concerned with the concept of intelligence, Abdullah, and इंसान का role in understanding and human cognition. It emphasizes the importance of active intelligence, जो हमने already discuss की, or also being able to cultivate and develop this faculty through which Aristotle suggests is we can develop and cultivate this faculty through experience and practice. उसके बाद अगर हम चैप्टर 7 की तरफ आते हैं इस बुक 6 के, वी डिस्कस Aristotle discusses the virtue of wisdom. पहले तो उसने कहा था इंटेलिजेंस इज द हाईएस्ट पार्ट ऑफ आवर सोल। यहाँ वो ये कह रहा है कि विजडम इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ द नॉलेज दैट अ ह्यूमन कैन पोजेस। इसमें थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स दोनों हैं अब्दुल्ला। तो बेसिकली यू कैन से कि प्रैक्टिकल विजडम को जब हम आपके लिए प्रैक्टिकल विजडम, और मैं मुझे ये समझ आई कि जब आप प्रैक्टिकल विजडम को साथ में इंटेलिजेंस के साथ जब मिला देते हो या फिर साइंटिफिक नॉलेज के साथ मिला देते हो, यू गेट द जनरल विजडम बेसिकली। इट इज़ बेसिकली उसने कहा कि विजडम इंसान के अंदर तब आती जब जब इंसान बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स जो हैं जो यूनिवर्स के अंदर है उनको अंडरस्टैंड करना शुरू कर देता है, or he also develops an ability to apply those principles and wisdom or या फिर knowledge in his practical situations. तो अब्दुल्ला, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, practical wisdom was all about practically applying those things that are necessary
और जो इंटेलिजेंस है या फिर आप कह लो साइंटिफिक पार्ट ऑफ सोल था, साइंटिफिक नॉलेज जो थी, इट वॉज ओनली बेस्ड विद थिंकिंग। मगर यहाँ विजडम में उसने कहा है कि वी इट विजडम इज बेसिकली प्रैक्टिकल एज वेल एज यू कैन से इंटुइटिव एज वेल। इट इज बेसिकली you can say theoretical and practical in aspects. उसके बाद एरिस्टोटल आगे से आगे आर्ग्यू करता है कि विजडम इज नॉट समथिंग दैट कैन बी obtained in small period of time, but it is wisdom is something that is acquired through long uh, lifelong pursuit of knowledge. जब एक इंसान पूरी लाइफ अपनी नॉलेज के ऊपर वफ कर देता है with knowledge and understanding, और उसकी जो constant effort है, through that he is able to learn about, you can say, fundamental principles that governs the universe, and then he develops the wisdom. You can say Aristotle कहता है कि wisdom जो है, wisdom is the ultimate, should be the ultimate goal of a human knowledge and human life, क्योंकि it involves both theoretical and practical knowledge, and it also requires the long life pursuit of knowledge as well as long life pursuit of growth as well. Abdullah, your internet is not working again. Hello. Yes, Abdullah, can you hear me? Hello. यस अब्दुल्ला, आपका इंटरनेट सही नहीं चल रहा है, मेरे यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। हेलो। हेलो, आवाज़ आ रही है बैनुमान? यस, आई कैन हियर यू नाउ। तो अब्दुल्ला, यस, मैंने भी विजडम को डिटेल में डिस्कस किया, जो कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज दैट अ ह्यूमन कैन पोजेस। तो मैं बस बेसिकली ये डिस्कस कर रहा था कि ओवरऑल you can say कि एरिस्टोटल ने ये एरिस्टोटल व्यूज विजडम एज द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। और उसने हिसाब में ये भी कहा है कि विजडम इन्वॉल्व्स थ्योरेटिकल रीजनिंग एज वेल एज द प्रैक्टिकल नॉलेज एज वेल। और विजडम एक कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में हासिल की जाए, जबकि विजडम इज एक्वायर्ड आफ्टर द लॉन्ग लाइफ परस्यूट ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ। उसके बाद अगर हम चैप्टर 8 की तरफ जाए अब्दुल्ला, तो चैप्टर 8 में आप कह लो बेसिकली पूरा रैप अप किया, आप कह लो कि पूरा एक शॉर्ट
शॉर्ट में उसने अरिस्टोटल ने पूरी अपना जो इस चैप्टर नंबर 6 बुक नंबर 6 को डिटेल में उसने डिस्कस किया है। uh, Basically, Abdullah, do you want to add anything over here before we go on? यार, इट्स वीव डिस्कस्ड मोर और लेस एवरीथिंग। और सममिंग अप में वो वही रीआइट्रेट करता है जो उसने पहले स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में रीआइट्रेट किया था, स्टेट किया था, सॉरी, कि आपको राइट प्रिंसिपल पता होना चाहिए टू कल्टिवेट बोथ द मॉरल वर्च्यूज एंड इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज। और वो राइट प्रिंसिपल वो कहता है विजडम है, विच अगेन इज एन अमालगमेशन ऑफ ऑल द इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज। तो बात सारी वहीं पे आ जाती है कि the importance of these intellectual virtues is emphasized by the importance of wisdom. Then we move on to the last chapter, which is again basically this. Nothing new he adds in the eighth in the last chapter, but just the importance of education and the importance of cultivating these virtues. हाँ, या मैं देखा था कि इसमें ज़रा उसने ना क्विकली उसने अभी कह लो कि इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज़ को उसने डिवाइड कर दिया है दो कैटेगरीज में बेसिकली, विच इज़ थ्योरेटिकल नॉलेज एंड प्रैक्टिकल विजडम में। उसने बेसिकली सारे इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज़ को उसने डिवाइड कर दिया। अब थ्योरेटिकल नॉलेज में आपकी अंडरस्टैंडिंग, साइंस और विजडम और वर्च्यूज, और तो प्रैक्टिकल विजडम वाले वर्च्यूज जो हैं उसके अंदर प्रैक्टिकल जजमेंट, क्राफ्ट्समैनशिप और प्रूडेंस, ठीक है। उसके अलावा फिर उसने आगे बाबा जाके उसने ये बताना चाहा है कि उसने क्या है कि अंडरस्टैंडिंग जो है इस बेसिकली अबाउट being a bit about the ability to grasp the first principles of a subject. उसके बाद ने कहा science is the ability to deduce conclusions from these first principles. So understanding is about understanding the first principles. Science is science का जो science is about the ability जिसके ज़रिए हम आपके conclusions निकाल सकते हैं from these first principles। और wisdom जो है उसने क्या है कि विजडम एक ऐसी चीज़ है विच इज़ कंसर्न विद जजमेंट ऑफ व्हाट इज़ ट्रू एंड व्हाट इज़ फॉल्स। और जजमेंट को ही यूज़ करते हुए इंसान राइट कोर्स ऑफ एक्शन जो है उसको चूज़ कर सकता है अपनी जजमेंट के अंदर। आगे जाके उसे बताया कि प्रैक्टिकल वही सारा वो एक रिकैप दे रहा है क्विकली। प्रैक्टिकल जजमेंट जो है इट इज़ बेसिकली यू कैन से एबिलिटी टू मेक good decisions in real life, in real world situations. Craft is the ability to produce something new with skill and expertise. Prudence जो है is the ability to choose what the right course of action, more or less in moral and and political matters। ठीक है। और उसने आखिर में जाके सबको रैपअप करते हुए उसने क्या है कि अगर हम नोट करें तो देखा जाए कि जो सारे वर्च्यूज जो हैं इंटेलेक्चुअल वर्च्यूज, दीज आर ऑल रिलेटेड टू विजडम in a way that they all involve the ability to judge correctly and to act and to act in accordance with that right judgment। और उसने उसने बस ये बताया कि आखिर में उसने बताने की कोशिश की कि विजडम इज द टाइप ऑफ थिंग दैट शुड बी द गोल ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। और विजडम कैन ओनली बी अचीव थ्रू द लाइफ लॉन्ग परसूट ऑफ नॉलेज। तो अब्दुल्ला, व्हाट डू यू थिंक अबाउट विजडम? और आप ये हम अब मैं ये भी सोच रहा था कि हमें हमारी एजुकेशन में विजडम सिखाई जाती है कि नहीं सिखाई जाती, कि हमें सिर्फ प्रैक्टिकल नॉ हमें हमें सिर्फ आप ये कह लो कि साइंटिफिक नॉलेज ज़्यादा दी जाती है हमारे मुआशरे में जो एजुकेशन के अंदर हम क्या हमें विजडम दी जा रही है या फिर हमें प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल विजडम भी दी सिखाई जा रही है कि हमें सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज सिखाई जा रही है विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ प्रैक्टिकल विजडम। और क्या यही वजह है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम फेल हो रहा है और हम जो है हम खोते तैयार कर रहे हैं और ना कि ऐसे हमारे यार स्टूडेंट्स निकल रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक? यार, आई बिलीव कि विजडम कैन नॉट बी टॉट, राइट? क्योंकि विजडम बीइंग the quality of having good judgment and the continual pursuit of knowledge itself, like philosophy, which means love of wisdom could mean the love of the pursuit of knowledge। और ये जो परस्यूट है, ये आपको आपको नॉलेज तो दे सकता है एजुकेशन सिस्टम, बट वो जो उसके साथ एक मोहब्बत वाला रिश्ता है ना,
वो आपको खुद ही डेवलप करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक कि कोई भी ए लेवल के स्टूडेंट जो है उसको बड़ा ही कोई पढ़ाई से प्यार है। जो साइकोलॉजी स्टूडेंट है वो नॉट फॉर द सेक ऑफ हिज ग्रेड और द पोटेंशियल जॉब्स ही कुड गेट बाय दैट डिग्री, वो ही इज नॉट डूइंग इट फॉर इट्स ओन सेक, राइट? सो इट कैन नॉट बी कल्टिवेटेड थ्रू द एजुकेशन सिस्टम। आई हैवंट सीन मेरा व्हाई आई डिडंट गेट इनटू फिलॉसफी बिकॉज ऑफ कोई कोर्स या कोई डिसिप्लिन जो मुझे यूनी में पढ़ाया हो। Philosophy is completely opposed to what I'm studying right now in bachelor's Sorry, marketing. what I basically meant to say, also इस बात को सीख दूंगा कि wisdom cannot be taught, और wisdom यूं नहीं है कि हम कर किसी को सिखा सकें, but I was basically trying to say कि practical wisdom, the wisdom of judgment of what is right and what is wrong, should that be included in our education system, या फिर ये हमारे एक पेरेंट की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को सिखाए, या फिर ये कहाँ से सीखेंगे लोग, इफ पीपल वांट टू फॉलो प्रैक्टिकल विजडम? मेरे ख्याल में तो प्रैक्टिकल विजडम जो है is basically it is built through habituation and practice. It is basically learned through your experience. It also need to have some kind of knowledge as well, और नॉलेज जो है वो आपको मेरे ख्याल में आपके पेरेंट्स के ज़रिए ही आपको मिल सकती है, who can give you knowledge through their experience in past, और वो आपको सिखा सकते हैं। बट बेसिकली एट दी एंड अब्दुल्ला, इस पे आप ये कह सकते हो कि डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल, और वो कैसे उस, और इफ़ ही डिसाइड्स टू डू व्हाट इज़ राइट और नॉट। बट व्हाट डू यू थिंक अब्दुल्ला, प्रैक्टिकल विजडम की हमारे आज के दौर में की कितनी कितनी इंपॉर्टेंस है एजुकेशन की, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन? Yeah, importance. So we both know what's the importance of it, right? It's the importance is utmost, right? लेकिन it's not a concrete discipline जो आप as a course unis में पढ़ा सकते हो, if I'm not mistaken. Yeah, you can study ethics, you can study philosophy, you can study metaphysics, ontology, but practical wisdom is something which has to be learned practically, right? So that प्रैक्टिकली, is upon the individual because there isn't anything concrete about it which could be issued as a course. या And सो they just अब जैसे कि हमें पता है कि प्रैक्टिकल विजडम में तो दो दो चीज़ें हैं ना, एक तो हमारी प्रैक्टिकल पार्ट है जो हमने खुद प्रैक्टिस करना है, और एक है नॉलेज। नॉलेज तो हम, जैसे कि तुमने बताया अब्दुल्ला, कि हम एथिक्स बच्चों को पढ़ा के उनको एक नॉलेज दे सकते हैं प्रैक्टिकल विजडम की। बच्चों को जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स हैं, पेरेंट्स पेरेंट्स शुड मेक श्योर कि वो प्रैक्टिकली उस चीज़ को अप्लाई करें अपनी रियल लाइफ सिचुएशंस में। देन आई थिंक सो दैट वुड बी मोर, you can say, more or less much applicable, या फिर आप ये कह लो कि ये ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। व्हाट डू यू थिंक? Mm, यार देखो, एक बच्चा है, ठीक है, वो फॉर एग्जांपल यूके में रह रहा है और वो सीख रहा है एथिक्स, एथिक्स एज कन्फर्ड बाय दैट सोसाइटीज स्टैंडर्ड्स, राइट? वो सीख रहा है, लेकिन उसके जो माँ बाप हैं वो उसको प्रैक्टिकल विजडम दे रहे हैं इन द सेंस कि वो जो बच्चा देख रहा है अपने अम्मी अब्बू के एक्शंस को और वो एक्शन से सीख रहा है, तो वो बच्चा प्रैक्टिकल विजडम हासिल कर रहा है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हासिल कर रहा है। इवन दो जो एथिक्स उसने पढ़ी है यूनिवर्सिटी में या स्कूल में वट उससे अपोज्ड हो वो प्रैक्टिकल विजडम। सम ऑफ द प्रैक्टिसेस हिज और हर पेरेंट्स माइट बी डूइंग, दे माइट बी अपोज्ड टू दैट व्हिच दे आर स्टडीइंग इन स्कूल। तो प्रैक्टिकल विजडम, आई थिंक सो, इट इज ग्रेटर अगर तो वो कॉम्प्लीमेंट होता है विद योर साइंटिफिक नॉलेज या with the knowledge which you learn in this education system. लेकिन both without the other they're just empty, they're not of much use. But I would say कि अगर तुम strictly पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हो तो वो डिबेट बिल्कुल डिफरेंट है, बट ऑन द होल इट्स समथिंग के, या आई एग्री, इसमें एक कमी है वो वाली कि जो आप इंटेलेक्चुअल वर्चुअस की बात कर रहे हो वो कल्टिवेट आपको खुद ही करना पड़ेगा। इट्स नॉट लाइक यू रीड अबाउट एथिक्स और आप एक वर्चुअस इंसान बन जाते हो, इट डजंट हैपन लाइक दैट। तो वही वो मगर अब्दुल्ला, उसको इंस्पायर के वो अंदर से आएगा आपके, और मगर इट्स नॉट बेसिकली अब्दुल्ला, एजुकेशन से नहीं आ सकता। मगर मैंने ये फ़ील किया कि हमारे माशरे के अंदर प्रैक्टिकली तो कुछ हो प्रैक्टिकली तो कुछ हो नहीं रहा, मगर नॉलेज भी नहीं दी जा रही बच्चों को। मतलब कि मैंने कभी नहीं देखा कि कभी किसी पेरेंट्स को अपने बच्चों को बिठा के समझा रहे हों कि व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट। बेसिकली पेरेंट्स ये समझते हैं कि शायद ये जो नॉलेज है ये इनेट है इन सम काइंड ऑफ, मतलब कि बच्चा मुसलमान पैदा हो गया तो आई डोंट नो कि उनका पीछे क्या। मगर मैंने जो ये फ़ील किया है कि बच्चे वही, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, कि बच्चे पैदा करके फेंक देते हैं बेसिकली। बच्चों की तरबियत उस तरीके से नहीं होती, उनको उस तरह एथिक्स या मॉरल्स नहीं सिखाए जाते।
तो अब्दुल्ला, क्या ये भी डाउनफॉल हो सकता है सोसाइटी का, या फिर व्हाट डू यू थिंक मैन? लाइक इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स नाउ। उनको, अगर बच्चों को एथिक्स और मॉरल्स ना घर के लेवल पे सिखाए जा रहे, ना एजुकेशन में सिखाए जा रहे, और प्रैक्टिकल मतलब कि जो प्रैक्टिकली अप्लाई हो रहे हैं, या मतलब कि अब्दुल्ला फॉर एग्जांपल, मैं तुझे बताता हूँ कि ना, सच बोलना अच्छी बात है, ठीक है, तूने, और मैं तुझे इसका एप्लीकेशन करके दिखाता हूँ, तू कहता हूँ यार वाकई सच तो बोलना अच्छी बात है, मगर फिर तू सच बोलते बोलते बिल्कुल ही एक्सट्रीम पे चला जाता है, ठीक है। You go on to the extreme because you don't have the knowledge about virtues, के virtues को किस तरह हमने एक मीन के अंदर प्रैक्टिस करना है, करेज को किस तरह हमने मीन के अंदर प्रैक्टिस करना है, और ये सारी नॉलेज है। बट आई थिंक सो we should be able to get this knowledge from somewhere, either that is from our education institute or from our homes। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था अबाउट द गोल्डन मीन ऑफ एरिस्टोटल, मतलब कि एक जो बंदा बहुत ज़्यादा करेजियस है, वो इसका मतलब ये कि वो रेकलेस है, इज नॉट थिंकिंग इन द स्ट्रेट माइंड। और या मतलब कि और जो बंदा है जो सिचुएशन को देख के समझ के मतलब कि बीच में नहीं उछलता, ही अंडरस्टैंड्स कि हाउ द सिचुएशन इज हार्मफुल फॉर हिम, और वो अपने आप को अब्सटेन कर लेता है स्टूपिड स्टूपिड बंदे से बेसिकली। तो बोला, व्हाट डू यू थिंक कि बच्चों को तो मॉरल एथिक्स कहीं सिखाए नहीं जा रहे हैं, जो सिखा भी रहे हैं दे आर नॉट रियली एक्सप्लेनिंग देम, और इट इज़ बेसिकली अ बिग ब्लैक होल। मतलब क्या समझते हो? स्ट्रिक्टली इन पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट। But in Pakistani context, yes, basically because we are from Pakistan. यार पहली बात तो कि एथिक्स नहीं पढ़ाई जा रही, राइट। आई थिंक वी कैन बोथ एग्री ऑन दैट। लेकिन जो प्रैक्टिकल विजडम, चलो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो वो घर से सीख रहे हैं ना, इट्स वेरी मच सिमिलर टू व्हाट यू सेड कि it's like they're making children and they're not even गिविंग देम द प्रॉपर एजुकेशन, जो कि उनको ना से स्कूल से मिल रही है ना उनको घर से मिल रही है। और जो वो बच्चा देख रहा है, फॉर एग्जांपल उसका बाप रिश्वत ले रहा है, विच हैपन्स इन सम केसेस इफ नॉट मोस्ट, या उनका बाप झूठ बोल रहा है, या फिर वो नमाज तो पढ़ रहा है लेकिन वो अपनी बीवी को भी मार रहा है। ये सारा प्रैक्टिकल विजडम जो है विच इज़ ऑन एन एथिकल लेवल टोटली डेट्रीमेंटल फॉर द चाइल्ड, राइट। तो वो बच्चा जब ये चीज़ें देखते हुए बड़ा होगा, इवन तो उसने एथिक्स नहीं पढ़ी है, उसने नहीं पढ़ा कि ये चीज़ें जो घर में हो रही हैं, जो वो देख रहा है वो गलत हैं ऑन ऑन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो they'll embody that and they'll emulate that as it's their ideal, क्योंकि his parents are his ideal रहा। तो he'll only emulate all their virtues and their vices। तो it's important कि अगर आप practical wisdom सही नहीं सीख रहे, कम से कम आप एक लेवल पे ethics तो सीख रहे हो जो आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ानी चाहिए। लेकिन in most cases in Pakistan especially you deprived of both a good framework of practical wisdom and a framework of ethical और जो scientific knowledge आप कह लो, जो आपको यूनिवर्सिटी में पढ़ानी चाहिए। तो इट्स लाइक नो मैटर व्हाई यू सी ऑन ऑल दीज रोड्स सच एंग्री पीपल जो हर वक्त गुस्से में फिर रहे होते हैं बाहर, कि उन्होंने निकालना है गुस्सा अपने कहीं पे। और यू नो दीज विशियस पीपल विच यू सी अराउंड। तो इट्स जस्ट कि इट्स रॉन्ग ऑन सो मेनी लेवल्स कि अगर आप एक को डिस्कस करो यू विल हैव टू गो ऑन 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 द इंटायर ट्रेजेक्टरी ऑफ मेंशनिंग एवरीथिंग दैट्स रॉन्ग विद सोसाइटी, जिसके ऊपर अगेन एक कंप्लीट सीरीज इट डिजर्व्स ऑन इट्स ओन। वही ना अब्दुल्ला, अब जैसे कि यार अगर हम अपने रिलीजन के एक्सपेक्ट में देखें, मतलब कि प्रैक्टिकली तो हम बच्चे को नमाज़ पढ़ना सिखा सकते हैं, मगर अगर हम उसको वो नॉलेज ही ना दें कि खुदा खुदा बेसिकली अल्लाह ताला की ज़ात कितनी बड़ी है, और व्हाई वी थिंक कि अल्लाह ताला की ज़ात एग्ज़िस्ट करती है, और अल्लाह ताला ने किस तरह हमें बताया कुरान पाक में, हम उसको वो सब एक्सप्लेन किए बगैर हम उसको बस प्रैक्टिकली कहते हैं भाई तू नमाज़ पढ़नी है 5 दिन, 5 वक़्त दिन, और 5 दफ़ा दिन में। और मैंने काफ़ी सारी एग्जांपल्स देखी यार, मतलब कि मेरा एक दोस्त है, उसका कज़न जो था वो 5 वक़्त का नमाज़ी और हाफ़िज़ कुरान था, एंड ही टोल्ड मी दैट उसका कज़न जो है वो बेसिकली एथियस्ट बन गया जब वो जर्मनी गया पढ़ाई करने। विदिन 2 और 3 ईयर्स ही टर्न्ड एथियस्ट। I think so. This is occurring because of lack of you can say practical wisdom। तो वो कर रहा था, वो 5 वक़्त की नमाज़ तो पढ़ा था, उसने कुरान पाक तो सारा याद कर लिया था, मगर उसने वो नॉलेज नहीं हासिल की बेसिकली। वो जो आप कह लो थ्योरेटिकल नॉलेज जो थी कुरान पाक की और जो रिलीजन की, उसने उसको सही से नहीं पढ़ा या फिर नहीं समझा। तो उसमें हमें शायद इसी वजह से अब्दुल्ला आज के दौर में भी आप देख लो कि कितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना कितना ईज़ी हो गया है।
पहले कभी किसी दौर में था कि आप चैट जीपीटी या किसी किसी और जगह पे कुछ लिखो और वो आपको 500 वर्ड्स का पूरा एक्सप्लेनेशन लिख के दे दे एक सिंपल सी टर्म के बारे में। लोग तो अपनी लीगल एडवाइसेस ले रहे हैं चैट जीपीटी जैसी इन्फॉर्मेशन, मगर फिर भी आप देखो कि जो डम्प लोग जो हैं हम बेसिकली अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। और कुछ उनमें भी डम्प लोगों में भी कुछ लोगों की किस्म एक तो है जो बिल्कुल ही दिमाग से ही पैदल है, उनके अंदर नॉलेज भी नहीं है। फिर उसके उस किस्म के लोग भी हैं जिनके पास नॉलेज है और प्रैक्टिकली नॉलेज को अप्लाई नहीं कर रहे, और फिर कुछ ऐसे हैं जिनमें नॉलेज नहीं है मगर वो प्रैक्टिकली एक सही काम कर रहे हैं, बट दे डोंट हैव द नॉलेज। और हमें इस जो मेरे ख्याल में जो बेस्ट इंसान होगा वो होगा जिसके अंदर प्रैक्टिकल और उस प्रैक्टिकल नॉलेज भी होगी और एक थ्योरेटिकल नॉलेज भी होगी। व्हाट डू यू थिंक? Yeah, you talked about so many different things. Let me first grapple with the first part, which is about uh, देखो यार, बात ये है कि हम अगर एक चीज़ की नेसेसिटी नहीं समझते ना, उस चीज़ की एसेंस, तो हम उस चीज़ को एमुलेट नहीं कर सकते। जहाँ तक रिलीजन की बात है, एक इंसान जो फंडामेंटलिस्ट है, इन द सेंस कि वो नमाज़ें पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, और उस ही जस्ट लॉस्ट हिज रूट्स लेटर ऑन इन हिज लाइफ। वो व्हाई वाज़ दैट द केस? क्योंकि उसने अपने बचपन में देखा कि जो पेरेंट्स हैं वो उन्होंने मुझे कहा कि यार नमाज़ पढ़ो, पढ़ो। उन्होंने उसकी इम्पोर्टेंस नहीं बताई, उन्होंने मुझे रीज़न नहीं बताई, मैंने कभी खुद एक्सप्लोर नहीं किया कि खुदा एग्ज़िस्ट करता है भी कि नहीं। अपने रिलीजन के डब्बे से बाहर निकल के, अगर आप हिंदू हो या मुस्लिम हो, आप निकल के देखो, यार मेरा जो मज़हब है वो एक मज़हब है। फ्रॉम डज़न्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, हाउ एम आई श्योर कि दिस इज़ द ट्रुथ? क्या मैं श्योर हूँ कि ये सच है? क्या मैं श्योर हूँ कि इस्लाम इज़ द ट्रुथ? क्या मैं श्योर हूँ कि हिंदुइज़्म इज़ द ट्रुथ? इफ यू एक्सप्लोर दैट, और अगर आप अपना बिलीफ को रैशनलाइज़ करो विद एविडेंस, थ्रू एक्सप्लोरेशन, जो साइंटिफिक नॉलेज है, तो आपका प्रैक्टिकल विज़डम कॉम्प्लीमेंट होगा और आपका बिलीफ और स्ट्रांग होगा। इससे अगर आप जर्मनी जाओ या यूके जाओ, तो यू वोंट टर्न एथीस्ट देन, बिकॉज़ आपका एक आइडेंटिटी क्राइसिस रुक जाएगा। दूसरी बात कि you will be much more grounded in reason rather than blind faith. Blind faith, I was grounded in blind faith around 3 years ago, 2 years ago. I had to get it out of that through reason, which most of us have to, if we have to sustain ourselves through suffering. Or it's like, the second important thing is to remove all bias in the sense कि practical experience जो है उसका एक inclination होती है towards having certain tendencies, कि आप biased होते हो towards some things, even though your scientific knowledge or theoretical knowledge tells you not to be biased against those things. To 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 get rid of that bias in our practical experience, in our practical wisdom, we again have to complement that with scientific knowledge. So at the end, it's just at the end ke we need to complement the both of them. Otherwise it's अब्दुल्ला just वही it's just no use. बेसिकली मैंने एक और चीज़ भी डिस्कस करनी थी, मतलब कि बेसिकली मुझे इफ़ यू बिकॉज़ मसला है कि मैं ज़्यादातर फ़ोन पे एक्टिव होता हूँ। तो मैंने देखा कि वो हमारे अकाउंट पे एक कुछ इंडिविजुअल्स मैसेज कर रहे थे, दे वर लाइक व्हाई यू आर discussing the stuff that people are not really able to understand. I told him first of all कि you haven't even watched even one of our podcasts, and he admitted, उसने कहा भाई मैं नहीं देखी। मैंने कहा then how you are able to judge कि जो कंटेंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो इतना डिफिकल्ट है कि वो लोगों को समझ ही नहीं आ रही। दूसरा वो कहता है कि आ, आप इस्लामिक स्टडीज सिखाओ या आप क्या फ़िलासफ़ी सिखा रहे हो? फ़िलासफ़ी से तो इंसान अच्छा इंसान नहीं बन सकता, इस्लामिक स्टडी से बन सकता है इंसान। और वो इतना इतना वो आप कह लो कि ही वाज़ सच एन एंग्री इंडिविजुअल कि वो मुझे साथ में गालियाँ दे रहा। मतलब कि आई न्यू वेयर ही वाज़ कमिंग फ्रॉम, थोड़ा-सा फ्रस्ट्रेटेड था, पता नहीं शायद वो कहीं और का गुस्सा कहीं और निकाल रहा था। ही वाज़ फ्रस्ट्रेटेड एट समवन एल्स, और वो उसने बस देखा हमारी स्टोरी या मेरा वो रील देखी, उसने जल्दी से हमें मैसेज करना शुरू कर दिया। तो मैंने देखा दुल्ला कि लोगों के अंदर एक एंगर भी है जो लोग प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, और बेसिकली दुल्ला why uh, why do you think philosophy is the answer, Abdullah? फ़िलासफ़ी क्यों ज़रूरी है इस्लामिक स्टडीज़ के साथ? मैं अब्दुल्ला जहाँ तक मैंने सुना, अगर आप देखो अब्दुल्ला फ़िलासफ़ी की जो बेसिकली जो ज़्यादा नॉलेज है जो हमें बाद में जो इस्लामिक गोल्डन एरा के अंदर इस्लामिक फ़िलासफ़र्स हैं, इब्न फ़राबी और इब्न रुशद और सीना, उन सब ने जो फ़िलासफ़ी डिस्कस की और जो फ़िलासफ़ी को आगे फैलाया, दे वर एबल टू डू जब जब Arabs starting translating the books from Library of Alexandria and Greek 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 texts. books
और रोमन बुक्स को जब उन्होंने ट्रांसलेट करना शुरू किया, देन इस्लामिक गोल्डन एज शुरू हुई। इस्लामिक गोल्डन एज के अंदर फ़िलासफ़ी का एक बड़ा हाथ था। और जैसे ही ये सारी बुक्स जो थी सर्कुलेशन में होना बंद शुरू हो गई था, मुसलमानों का डाउनफॉल शुरू हो गया बेसिकली। एंड मोस्ट ऑफ द ह्यूमंस अब्दुल्ला, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, देवर आई थिंक सो एबल टू एक्सेप्ट इस्लाम बिकॉज ऑफ द individuals who were philosophers, Islamic philosophers basically. आप इब्न अरबी की एग्जांपल ले लो। आप हमारे सब कॉन्टिनेंट में खुरासान में, ईरान, इराक में देख लो कितने फिलोसफर्स आए और कितने ज़्यादा लोग आए जिन्होंने कितने लोगों को मुसलमान किया थ्रू देयर रीजनिंग एंड थ्रू देयर नॉलेज। Abdullah, why do you think your philosophy is important more than our Islamic studies? I would not say more than, but I would say कि they're almost equally important in the sense कि यार आप कैसे बन Sorry, सकते हो sorry, I was wrong. I meant to say कि how these are both compatible basically, और ये कैसे ज़रूरी हैं एक दूसरे हाँ के साथ। I would just say कि यार you can't be a good Muslim without being a good human being, right? और आप कैसे सोच सकते हो कि आप नमाज़ें पढ़ोगे, फंडामेंटलिज्म की पिट पिट के अंदर जाके आप बैठोगे, इनटू द रूट्स ऑफ फंडामेंटलिज्म। आप नमाज़ें पढ़ रहे हो, कुरान पढ़ रहे हो, लेकिन आप गालियाँ भी दे रहे हो, आप तशद्दुद भी कर रहे हो, आप you're doing everything that is wrong, which your very religion, which you believe that you follow rightly, tells you not to do. And then you don't even see your own hypocrisy. आपको मज़हब बताता है शरीयत के बारे में अबाउट राइट कॉन्डक्ट, बट इट डजंट टेल यू नॉट टू गेन अदर सॉर्ट्स ऑफ नॉलेज, राइट? चीन हासिल करो नहीं, नॉलेज हासिल करो, बेशक चीन तक जाना पड़े, राइट? तो इट डजंट टेल यू नॉट टू गेन अदर नॉलेज। आई जस्ट बिलीव कि knowledge is good insofar as it leads to God. And to dissect that statement, we would understand कि philosophy, for example, it teaches us about ethics, how to be a good human being. Psychology tells us कि हमारा अपना दिमाग किस तरह चलता है, cognitive behavioral therapy, all of those different kinds of branches, right? ये सारी जो ये जो branches हैं of the natural sciences और of theology even, ये एक end पे आके एक जगह जुड़ती हैं, which is the existence of God, or whether or not our life has a purpose। ये जो existential query है ना, ये सारी जो sciences हैं, they lead to that question, or as far as they do lead to that question, they're beneficial। बाकी कुछ pursuits, I'm not being very fundamentalist right now, I mean that statement कि as far as whatever you're pursuing the knowledge of, it leads to getting more knowledge of God's creations or knowledge of the world। physics आपको सिखाती है about the properties of nature, right? और metaphysics आपको बताती है about the fundamental principles of that matter। ये सारी जो sciences हैं, they lead back to the question of God। And so religion आपको बताता है about all those things, but it's equally important to delve into philosophy, into other kinds of knowledge, because at the end it will make you a better person, which you have to be before you become a good Muslim। Because it's I've seen so many people in my life जो रोजे भी रखते हैं, लेकिन चरस भी पीते हैं फिर इफ्तारी के बाद, और हर तरह का बुरा काम करते हैं, और क्योंकि दैट हैज़ गॉन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ हैबिचुएशन, जिस तरह एरिस्टोटल खुद कहता है कि विशियस एक्ट्स कैन पक्का हो जाते हैं वो, अगर तो आप उनको प्रैक्टिस करते रहते हो फॉर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम। तो the kinds of people I've met in my life, they were so lost, and they were so stuck in that loop of visual habits and behaviors कि they did not even realize कि जो मैं काम कर रहा हूँ, या तो मैं एक साइड चूज कर लूँ ना, एक कार की किताब है आइदर, और वो आपको एक ओवरव्यू देती है ऑफ द एथिकल लाइफ एंड द एस्थेटिक लाइफ कि या तो आप अयाश बन जाओ पूरा पूरा, या तो आप एक एथिकल लाइफ चूज कर लो, which फॉलोज ऑन टू द रिलीजियस लाइफ। आप एक चूज कर लो, आप ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में ग्रे एरिया में फंसे हुए हो, हिपोक्रिटिकल एरा के अंदर आप फंसे हुए हो, जिसमें आप दोनों को हासिल करना चाह रहे हो, बट दैट कैन नेवर बी द केस। यू कैन आइदर साइड विद ब्लैक और विद व्हाइट, देयर इज नो ग्रे एरिया as far as the question of religion or ethics is concerned। You can't mingle with both, but anything that makes it easier for you to have ethical knowledge, which philosophy does for the most part and religion does for the other part as well,
then those things are beneficial. That is why, यार देखो, नुमान, यू माइट हैव रियलाइज्ड एज वेल ना, कि जितने भी फंडामेंटलिस्ट माइंड्स होते हैं उनको उतनी ही नफरत होती है दूसरे क्राउड से। एक क्राउड, रिलीजन वाला क्राउड, फंडामेंटलिस्ट इस्लाम वाला क्राउड जिसमें सारे मुल्लास डोमिनेट कर रहे हैं, और उनको उतनी ही नफरत है दूसरे क्राउड से जो क्राउड थोड़े साइंटिफिक हैं। आई डोंट वांट टू नेम सम इंडिविजुअल्स, कुछ कुछ इस्लामिक स्कॉलर्स मुझे पसंद है जिनकी मैं वीडियोस देखता हूँ, जो बहुत, उनके पास साइंटिफिक नॉलेज भी है, जो जिन्होंने रिसर्च की हुई है, इनके पास 3-3 पीएचडीज हैं। तो उनको उन्हीं तरह के लोगों से नफरत होगी, बिकॉज दे कैन नॉट एमुलेट दोज वर्च्यूज। इट्स ऑल अबाउट आइडेंटिटी पॉलिटिक्स एट द एंड ऑफ द डे। और जो लोग उन फंडामेंटलिस्ट मुल्लास को देखते हैं, वो उनकी वर्च्यूज एमुलेट करते हैं, वो उनका आइडियल उनको बना लेते हैं। तो एट द एंड ऑफ द डे इट ऑल कम्स डाउन टू आइडियलिज्म, और द परस्यूट ऑफ द आइडियल। हमने क्राउड्स बनाए हुए हैं, इट्स जस्ट हर्ड मेंटालिटी। इट्स सच अ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक कि मैं अभी जो बोल रहा हूँ, इट इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू अ ग्रेटर होल, क्योंकि ये सारी सारी जो चीज़ें हैं ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। दिस हर्ड मेंटालिटी, दिस नीड फॉर द परस्यूट ऑफ एन आइडियल, ये सारी हैं प्रॉब्लम्स जो हमें नज़र आती हैं इन आर सोसाइटी, स्पेशली पाकिस्तानी सोसाइटी। तो दिस why philosophy is important. I had this conversation with you, Vicky. We're gonna have a separate podcast on that. Even though we've hinted our ideas about it, I would like कि हम अगली या उससे अगली podcast इसके ऊपर करें, and it will be a very long episode. Sure, Abdullah, क्योंकि my mind is not in the right place today. I'm having a bit of a headache right now. I don't know why. और मगर yes, Abdullah, you really beautifully wrapped up everything और आपने काफ़ी तरीके से समझा दिया. But yes, we are going to make a separate podcast on this topic because this topic needs a podcast because recently I think so कि हमारे पाकिस्तान में भी there is a lot of issues happening in our Pakistan because of fundamental extremism, दोनों किस्म की, in terms of scientific knowledge and in terms of ये कह लो religious knowledge, और उसके हिसाब से आजकल पाकिस्तान में जो फसाद मचा हुआ है, we do need to discuss that and we do need to discuss the both opposites, right, Abdullah, in the next episode, I think so. बट थैंक यू वेरी मच अब्दुल्ला, हम ये अपनी पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं क्योंकि पॉडकास्ट 1 घंटे से ऊपर हो गई है. एंड टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफ़िज़.